Very good evening, everyone. So let's start the discussion of liver channel. So liver means rising or the liver means starting. Actually, everything written in this PDF. Okay, so we will be discussing about the liver. Then there are certain laws of the liver, like a person is having eczema, headache, or the person is suffering with various problems, jaundice, constipation, and all. These all things given in the PDF, which I will provide. But right now I am writing so that everyone can understand very easily. So there are 4 directions. पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं हैं. Liver is rising. Liver is the starting. Liver is the rising. So we look at the 4 directions. East, west, south, and north, and this can be considered as a central part. ये कौन सा पार्ट है हमारा? Central part. So the starting means east, because sun is rising from the east. So morning start from the sunrise. So the wood element means east direction. So the direction of liver and gallbladder is the east. Okay, in the way we will be discussing, the south is the direction of fire, means heart and small intestine, pericardium and triple warmer. South is the direction of fire. Then best is metal, where we can see sunset. So the sun is rising here. And we can see the sunset here. So this is the direction of metal. And north is water. The center is earth element. Central is earth element. This chart is very much important. Earth element. Because in the Feng Shui, in the Vastu, this is the chart for Vastu. Okay, in the Feng Shui. Like, for example, if we are talking about the east, east is the direction of starting. East is the direction of initiation. East is the direction of sunrise. East is the direction of Buddha or the liver and gallbladder. Now we can see, just imagine one 4-5 year kid, जब कोई बच्चा छोटा होता है, उसका अभी जन्म हुआ है, अभी बच्चा छोटा है, because birth is Buddha. वो कैसा होता है? वो हलचल करता है कि शांत बैठता है? Always making a noise, naughty or very stable? Can you tell me?
Definitely, it's a very naughty. So naughtiness, halchal. For example, the 2 years or the 3 years or maybe the 5 years kid is coming in your clinic. Okay. Just imagine sitting in front of you. Okay. Now you're talking to the parents. In the 10 minutes, he will do lots of activity. आपकी टेबल पे जो पड़ा होगा वो उठाएगा, देखेगा, खींचेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा. He will keep asking, what is this, what is that? He will keep doing something on the other. That is the nature of Bud. Bud means like we can see the trees, the leaves, how they always in the movement. That is the Bud. Tree are always in the movement. So the balance Bud means who always in the movement. If the kid is naughty, we can tell normal kid. If always, if the kid is, agar chota bacha, if the child is very serious, not making noise, and just if you're telling sit here, sitting for 1 hour without making the noise, might be having some problem because this is not the nature of kid. So east is the direction of liver. Now this is a very important thing. In the same way, if we talk about the fire, south is the direction of fire. The fire means heart. The fire means small intestine. The fire means pericardium. The fire means triple warmer. The fire means love. What is fire? Fire means love. The emotion of fire is love. So that's why now listen very carefully. It's a very common, we are telling a small kid when they sleep. So when kids are sleeping, they should head towards east. Even they are studying, they should face towards east. Why? Because we want good energy. Good energy means that is the natural energy of the small child, and good energy is the energy who is keeping your the energy of childhoodness very, very normal. But after the marriage, शादी के बाद, we are asking the couple sleep heading toward the south. सिर किधर करके सोना चाहिए couple को? They should head toward the south because now we need more fire energy. This is the, we can see in the tradition people are following this. वो देखते हैं कि हमारा सिर साउथ में होना चाहिए. डू यू नो दिस? क्या आप जानते हैं इस चीज को? When we are a student, like all of you are a student, you can keep your head toward the east. Okay. But once we are married, we want love in the family life, we want more fire energy, we can keep the head toward the south. Now, in the same way, we can see the energy of metal is best. Metal, like there are two opposite energy. So this is the chanchalta. Here is chanchalta.
Chanchalta means always active, always mobile. On the other side, we have just opposite energy. There's a higher stable energy. Metal means higher stable energy. We will discuss metal later on. Right now, our focus is only wood. So metal is higher stable energy. Metal is the energy as in the Vastu Shastra. We are using these energies where the wood element is there. We are keeping aquarium, machli. Because what fish are doing, they are continuously moving and creating wood energy. Or we are keeping mayur pankh. They are green in the color and they are also increasing the wood energy because we want in the direction of east, we want lots of wood energy. That is called balance vastu. उसे हम कहते हैं बैलेंस वास्तु. Wood means activity, wood means halchal, wood means movement, wood means first step. When the patients coming in your clinic, if you are having good wood energy in your clinic, there are too many patients will be coming in your clinic. Suppose wood energy is very weak, patient will not come. Maybe you are highly intelligent. You are very, very intellectual. You are a magician, but still you will see patients are not coming, clients are not coming. Then some Vastu Shastri will be coming. Okay, telling, okay, put aquarium here or do this, do that. But remember one thing, we should balance the wood energy at the right place. If we are balancing that if we are putting that element on the opposite side, it might create some problem. That's why the fire, south is the direction of fire energy. I will give one more example. Fire means heart and small intestine. So the fire means heart, fire means small intestine. So fire is controlling our tongue. We will know this during the discussion of fire. Fire is controlling speech. Right now I'm speaking. I'm using my fire energy. Speech is coming from the fire. If my heart energy is very weak, my fire energy very weak, I will not able to speak properly. Because heart is giving fire to the tongue and I can speak. So the king of China, during giving the command, always facing toward the south. जो चाइना का राजा था, प्रजा को बिठाता था और कमांड देता था, उस राजा का चेहरा साउथ में होता था. Because south is the direction of fire, I am getting fire energies, and because of that I can become a good leader, I can give the good command, I can give a good speech. Okay. So I will give one more example here. Like say, on the one side we have fire, on the opposite side we are having water here. Water means north. The water means north.
So north is the direction of water or coldness. जो उत्तर दिशा होती है. So south, north, east, west. Wood, fire. Metal, water. Earth in the center. So north is the direction of fire or coldness. Now, we can use it for the treatment also. If the person is having too much fire, we can face toward the north. After the person expire, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, we are keeping the head toward the north. Do you know this? Why we keep the head toward the north? Because now body become cold, no energy, no heat, no circulation, we don't need fire. So keeping the head toward the north, right? So in this way, the east is the direction of Buddha. We should have good Buddha if we want to do some work. So we can pray facing east. We are making Jnana Mudra to increase our Buddha element. We are sitting in this posture facing east and we are doing prayer so that we can balance our Buddha energy ताकि हम अपनी Buddha energies को balance कर सकें. Okay? So now, when we talk about so this was the first thing. So we have talked about the directions. The direction of Buddha is east. Now let's talk about the energy. In the 5-element cycle, wood means we can think about the trees. The energy of wood is wind energy because wind is having moving nature. विंड का जो नेचर है वो हमेशा घूमना है. The wind is having two nature. Number one, rising, and number two, expanding. ये दोनों ही वुड के नेचर हैं. Rising and expanding. Suppose one I will give positive example, one I will give negative example. If you increase the wood in the child, they will be getting good height, so they are rising very nicely. This is the positive example. अगर बच्चों में वुड अच्छा हो तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनका एक्सपेंशन अच्छा होगा. Now I will give a negative example. If there is cancer spreading in the body, cancer expanding all around in the body, we want to arrest the cancer. The first treatment we have to give on the wood element, and you can see there are many acupuncturists like Master Tung acupuncture and even the TCM. If you are working on the cancer, first need to arrest wood. First need to sedate liver. Because the nature of wood expand all around. चारों तरफ फैलना. The nature of wood rising. The nature of wood is rising. The nature of wood is expanding all around.
वुड का नेचर है फैलना, वुड का नेचर है एक्सपेंड करना. इट इज वेरी पॉजिटिव थिंग until and unless we are talking about the cancer which is not positive. Now think in a positive way. चलिए हम पॉजिटिव वे में सोचते हैं. एक बच्चा है जो खूब ऊधम मचा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, आप भी उसके साथ खेलने लगो, ही विल बी वेरी हैप्पी. If you are playing with the kids, he is making a noise and doing lots of naughty things. Even you start playing with the child and he will be very happy. And he will learn also many things from you. On the other side, you scold the child, you beat the child, and उसे कैसे भी आप चाइल्ड को मार दो, पीट दो, डांट दो कि वो डर जाए और अपनी एक्टिविटी बंद कर दे. So this create lots of problem. This is called suppression of wood. This is called stagnation of wood energy, or we can tell liver chi stagnation. It might happen in the child. I am giving the example of child, but it might happen in the young age also, because every one of us is having lots of naughtiness. We want to be joyful sometime, we want to play, we want to make a noise, we want to do lots of naughty things. But someone is not appreciating you. आप कुछ भी उल्टा पुल्टा करते हैं, फालतू का मजाक करते हैं, लेकिन कोई उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टा बोल रहा है ना. So you want to expand. Suppose you are very angry. You are very angry. Okay. And someone coming to you and ask you why you are angry. Tell me why you are angry. He can ask you with a love. Then slowly your anger will subside. But you are angry, and someone coming and he become more angry than you. Then you will do suppression of anger. That is called suppression of Buddha. Now, this creates lots of problems nowadays. So, what I want to tell you, the nature of Buddha is always rising, expanding, rising, expanding. I will give an example. So, this is a bottle of perfume. ये परफ्यूम की बोतल है. आई एम स्प्रेइंग, बट स्टिल आई कैन स्मेल हियर. मैंने यहां से स्प्रे किया, दूर किया, लेकिन मैं आई कैन स्मेल इट. हाउ हाउ कैन आई स्मेल इट? हाउ द स्मेल इज कमिंग टू माई नोज. इट्स कमिंग थ्रू द विंड, इट इज कमिंग थ्रू द एयर, राइट और नॉट? कि हवा में कुछ भी हो, अच्छी चीज हो, खराब चीज हो, गैस लीकेज हो रहा है, immediately you will find, oh, something wrong, the leakage of the gas. It is coming through the wind. So wind energy is a very powerful energy. वुड एनर्जी एक ऐसी शानदार एनर्जी है, सारी एनर्जी को फ्लोट करा देती है. इट कैन टेक एनी एनर्जीज. So that's why very important thing I would like to tell you here. Let's see here. In the wood, we are discussing liver and gallbladder. So this is the wind energy. And this liver energy is flowing throughout the body all the time. This liver energy flowing throughout the body, flowing, expanding, rising, moving all the time.
So it will push the heart energy, it will push the spleen energy, it will push the kidney energy, it will push the all energy, जितने भी दूसरी एनर्जीज हैं ये सबको पुश करती जाती है. It is continuously expanding, rising, flowing, moving. So liver energy even will go in the intestine, it will pump the intestine, peristalsis movement. It will go in the heart channel, even it will give more power to heart channel. ये हर जगह जाएगी, ये हवा की तरह. तो जब wind energy is moving all the time and also giving movement to other channels को भी movement provide करती है. That's why if liver chi get stagnant, अगर liver chi अटक जाए, it might affect all the channels, all the other channels, whether the heart channel, the spleen channel, lung channel, large intestine channel, हमारे जितने भी channels हैं सबके सब प्रभावित हो जाते हैं. So there is a very good formula in the acupuncture, only 4-point formula. If you find the liver chi is stagnant, we are putting 4 gate. 4 gate means large intestine 4, both side, and liver 3, both side. This is the formula, sedate, 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 sedate. We will be discussing the location of these points, but right now I want to tell you the 4 points. अगर आपने 4 points दबा दिए, and the liver energy again will start flowing properly. Again, फिर से flow करना चालू कर देगी. If we are getting sudden trauma in the life, liver chi get stagnant immediately. Sudden trauma. Suppose we are driving a scooty and we got sudden accident. Trauma. We get liver chi stagnant. Put these 4 points. If we are getting sudden emotional trauma, liver chi get stagnant. अगर हमारे जीवन में कोई भी फिजिकल ट्रॉमा लगे या इमोशनल ट्रॉमा लगे, immediately liver chi get stagnant. Then one patient called me, doctor, I am in front of your clinic. I fall down from a scooty, and I am having lots of pain, I can't walk. यानी मेरे क्लिनिक के पहले आके स्कूटी से धड़ाम से वो पेशेंट गिर गया, उसको बहुत पेन हो रहा था. I put 4 point, Li4 both side, liver 3 both side. Within 10 minutes, entire pain gone. You can try during the any physical trauma. अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं गिर गया, मैं पड़ गया और मुझे दर्द हो रहा है, just 4 points. Because when person is getting any sudden trauma that create pain, maybe physical pain or maybe the emotional pain, so we can treat through the liver chi stagnation. Many of my friends, student, colleague called me sometime, oh, I got accident, what to do? Forget. I am emotionally very upset because of I have heard some bad news. Forget. तो forget एक ऐसे पॉइंट्स हैं. क्या होता है? As per the acupuncture, what are emotions? All emotions are energies. सारे इमोशन हैं, क्या है? वो एनर्जी है. Right now you are very happy, but if energy gets stuck in the lungs, if it is not flowing properly in the lungs, you will get sadness. You will get sadness immediately. If energy is not flowing properly in the kidney, you will get fear immediately. All the emotions are nothing but energies.
So if we are having any type of the emotional imbalance, just we have to balance the energy. Okay. So we can see the forget points. If I do my hand like this, we can see this muscle here. यहाँ पर हम मसल देख रहे हैं. The name of this muscle is interosseous muscle. The top prominence of this muscle is Li4. इस मसल का एकदम चोटी का जो भाग है, look at this muscle very properly. The top prominence of this muscle is Li4. Okay, and Li4. Same in the leg. अगर हम पैरों की बात करें तो पैरों में भी इसी लोकेशन में. Just imagine what can be the location. So look at my leg. मेरे पैर भी देख लो आप. So look at the leg. So, like see, I have taken the point between thumb and the index finger. Here also I will be taking the point between great toe and the index toe. So this is the point. Follow this gap, reaching in the last, that is the liver 3. So Li4, Li4, liver 3 and liver 3. Set it all the points. We are following this gap and reaching in the last. Because we can feel one bone here, reaching the last here. So 2 point in the legs and 2 point in the hand. तो इनको हमने लगाया. Immediately we can work on the emotional trauma. Immediately we can work if we are getting lots of anger, and after the anger we are getting heart pain. Why after the anger you are getting heart pain? ऐसा तो है नहीं किसी ने मुक्का मारा या किसी ने कुछ गलत दवाई खिला दी. ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना. आपने बस गुस्सा किया और मन में ही गुस्सा किया. Today one patient came. He told, when I am reaching late in my office, my time of the office is 10 o'clock. But suppose if I'm reaching by 10:30 sometime because of traffic, because of my personal problems, then I am get feared. Now my boss will tell something. So I start getting heart pain. Even boss is not telling anything. Even he start getting heart pain. So my question is this. There is no trauma, there is no any injury, there is no nothing, but you are getting pain here. What is that? There is a blockage in the energies. The energy is not flowing properly. If you find any such condition, immediately set it these 4 points: Li4, Li4, liver 3. This point are contraindicated during pregnancy because they can stimulate uterus. Li4 is contraindicated during pregnancy. Right? It is clear? Everything is clear about this? So what I want to tell you, liver channel is the channel who, the energy of the liver channel always want flow regularly, continuously, without any hindrance. लिवर की ऊर्जा हमेशा बहना चाहती है. ये हवा की तरह है. हवा को रोकना सही नहीं है. So now we can consider liver energy. Sometimes liver energies जैसे हवा चलती है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं हवा आंधी बन जाती है. आंधी बन जाती है. Sometimes we can see, मैंने प्रेग्नेंट के बारे में बताया कि जो Li4 और लिवर 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, क्योंकि इससे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है और एबॉर्शन हो सकता है ना. एबॉर्शन हो सकता है. Li4 is creating contraction in the uterus. It is contraindicated during the pregnancy. Okay. In the China, जब वो चाइना में रूल बना था ना, 1 family 1 child. Do you remember that rule? So they used to, if they see any pregnant female, so the army used to press this point. Immediately abortion. But please make sure, आपके पास कोई पेशेंट आया, उसने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, कुछ करो,
और आप लेके बैठ गए, कुछ नहीं होता कभी कभी। कभी कभी कुछ नहीं होता, बिकॉज there is a special technique to stimulate this point. If you want to create uterine contraction, what is the technique? You have to stimulate this point very vigorously, very intensively, very vigorously. So either you stimulate this point very vigorously, very intensively, or put the needle and stimulate this point very vigorously, very intensively, then only it will create uterine contraction and will cause abortion. So you have want abortion, that you should master this point. But sometimes you don't want anything. You are just putting the point, bad luck, abortion will happen. So please avoid this point, okay, during the pregnancy. So in this way, so what is the liver? Liver is like a air, liver is like a wind, but sometimes liver is like a storm, तूफान. कभी कभी लिवर तूफान बन जाता है. लिवर तूफान कब बनता है? Suppose air is coming, but there is a wall who is not allowing air to go. हवा आ रही है और एक दीवार आ गई सामने, हिमालय जैसा पहाड़ आ गया सामने, उसने एयर को नहीं जाने दिया. सो नाउ एयर विल go, will the when the air is not getting path, and sometime it become like a storm. So that is coming shortly after some time. So right now what I want to tell you, मैंने आपको बताया. So today just now we discussed the nature of liver is rising and expanding. It is clear? Rising and expanding. Now liver chi is never deficient. Liver chi kabhi kam nahi hoti. This is the statement. This is the golden statement. There is no liver chi deficiency. Okay. So now question comes, तो क्या लिवर कभी डेफिशिएंट नहीं होता? टीसीएम में यही तो हमें सीखना है कि लिवर यिन अलग होता है, लिवर ची अलग होती है. बोथ आर डिफरेंट थिंग, राइट? सो नाउ देयर इज a statement, liver chi is never deficient. So most of the time we sedate foregate. हमारे जो फोरगेट के पॉइंट हैं उन्हें हम sedate करते हैं. So we have discussed few points. Number one, we have discussed Bud means liver and gallbladder. The direction of Bud is east. Then energy of Bud is wind, and the nature of Bud is rising and expanding. We only have discussed this much. Okay, let's proceed. I think these 4 points are clear. 1, 2, 3 and 4 points. ये 4 points clear हैं. So now, Bud means starting of everything. If we talk about the seasons, अगर हम seasons की बात करें, so ऋतुओं की बात करें तो सबसे पहली ऋतु होती है वसंत ऋतु. There are 6 ऋतु, 6 seasons. पहली ऋतु कौन सी होती है? वसंत ऋतु. वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म. There are 6 ऋतुs. Spring season near about the March month, that is the starting of Bud energies. Okay. So that's why every element is connected with a different month.
Every element is connected with a different ritu or season. Wood is connected with the spring season. Spring season मतलब बसंत ऋतु. Okay. So now many people are getting pollen grains energies, pollen grain allergies, the attack of cough and cold, and the asthma and the allergy problem during the spring season. कई लोगों को स्प्रिंग सीजन में कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं हर साल. ये पैटर्न होते हैं लोगों के. One patient is coming to me, doctor, I am getting lots of cough, cold, asthma every spring season. But another patient will come, doctor, I am getting skin disease every rainy season. One patient will come, I get lots of pain in my arthritis every winter season. Every patient is having different disease pattern. इतना ही नहीं, patient आके बोलेगा, doctor, I am having headache every Sunday. One patient will come, I am having migraine headache every Wednesday. This is my, I am so surprised. I've I treated one patient, might be having headache on Wednesday, every Wednesday. After my treatment, that headache shifted on Saturday. So I don't know how it happened. He told, I'm happy it is shifted on Saturday because Saturday is my weekend. I can work on Wednesday. So thank you so much, doctor. Even I continued the treatment and then also gone. वो भी ठीक हो गया बाद में. But you can think कि हर Wednesday को होता है सिर दर्द. Many patients having blood pressure every afternoon. Some patient having BP every evening. Very fixed pattern. In the same way, if we talk about the seasons, many patient spring season बसंत ऋतु वो ऋतु है जब परागकण उड़ते हैं और कई लोगों को एलर्जीज होती है. Okay. If anyone is suffering with any disease during the spring season, you need to treat wood element. Remember one thing, whenever you want to treat allergy, any type of the allergy, you need to start the treatment from liver. Whether the skin allergy or the nasal allergies or any type of the allergies, किसी भी प्रकार की एलर्जी है, कहीं भी है, स्किन की डिसीज है या फिर सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड है, एलर्जिक अस्थमा है, एलर्जिक इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ द एलर्जिक प्रॉब्लम, एलर्जी, फर्स्ट यू हैव टू अरेस्ट लिवर. ओके. व्हाई व्हाई वी हैव टू अरेस्ट द लिवर? एलर्जी की बात मैं बताता हूं. जैसे उदाहरण के लिए, एक लड़की को अपनी सास से एलर्जी है और सास को अपनी बहू से एलर्जी है. So what is meaning of allergy? When I see my sasna, I get headache, I get like this. Even vice versa. What is allergy exactly? The meaning of allergy, when you are coming in the contact of something, there is a response of your body. That is allergy. Suppose I am going in the polluted air and I inhale the polluted air. So now my body is responding, oh no, it's a polluted air. This is allergy, allergic asthma. What is the meaning of allergy? Allergy means the response of my immune system. So that's why the response of my immune system against pollution, polluted air, bad air, pollen grains, or maybe I am drinking milk. Oh, I have allergy from the milk. I drink the milk is going in my intestine, and my immune system is, oh, no, this is a very bad thing. Start creating reaction. So what is the meaning of allergy? The meaning of allergy, the response of my immune system. तो मेरे इम्यून सिस्टम ने आक्रमण किया.
So that's why when you want to work on any type of the immune response, you have to work on liver. So next sentence I would like to tell you, liver is the great general, great fighter, and this is the, okay, season we have discussed, spring season. So whatever disease we are getting during the spring season, we have to treat the liver. The next thing I'm telling you, liver is great general, great fighter, and ready to fight or ready to respond to. Maybe with the pollen grains, maybe with the polluted air, maybe with your mother-in-law. So this response is ready to fight, response is coming from liver. तो जब भी हम एलर्जी को ठीक करेंगे, पहला ट्रीटमेंट कहाँ होगा? लिवर का होगा. अब आपने कहा ही इज हैविंग स्किन प्रॉब्लम, आई एम ट्रीटिंग, आई एम डूइंग गुड ट्रीटमेंट, बट यू आर नॉट टेकिंग लिवर. प्रॉब्लम विल नॉट गो विद द रूट. लिवर के बिना ठीक नहीं होगा. इज इट क्लियर? तो ये हमने समझा. दिस वाज द अनदर थिंग्स अबाउट द लिवर. इज द ग्रेट जनरल, liver the great fighter. Okay, now you are going to play cricket and you need 3 6 in 1 over. एक ओवर में 3 छक्के चाहिए तभी मैच जीतोगे. डू यू थिंक विदाउट aggressiveness, without ready to fight energy, you can hit the 6? उस समय गुस्सा आएगा जैसे किसी ने गाली बक दी, है साले इंडियन, या चलो कोई भी, यहाँ तो इंडिया वो भी चलता है, हो गुजराती, हो मुंबईया, चलता रहता है. अब उसे गुस्सा आ गया, अब देखो साला मैं तेरी बजाता हूं. पहली बॉल पे 6. वो 6 किसने मारा? एग्रेसिवनेस. इफ यू वांट टू बिकम ए गुड स्पोर्टी, you should have very balanced body energy, very balanced body energy, so that you should, क्योंकि लिवर की एनर्जी मीन्स एग्रेसिवनेस. You are hitting the ball and it's going to the boundary because of that aggressiveness through your hand. That is the good energy. So those who are having good body energy, balanced body energy, they can be the fire. Now suppose there is some person, great, what is the meaning of great general? Great general means senapati, the chief commander, who is going for fight. That energy is बुध. वो एनर्जी कौन सी है? वो बुध है, right? Now after the buddha, the fire is coming. Okay, after the buddha, definitely fire will come. If you are keep doing that work, so the energy will convert in the fire. But right now, that at that moment when you are very angry and you are hitting the 6, that is the energy of buddha, which is responsible to make you good sports person. तो जितने भी पहले, अभी तो नहीं होते हैं, पहले लोग सेनापति होते थे, कमांडर इन चीफ होते थे, मतलब पहले सेनापति, हर सेना का एक सेनापति होता था. The person who is there should be very aggressive, but also balance. So that's why liver is called great general, great fighter,
ready to fight, ready to respond immediately, quickly. Okay. So now we can think in it too. There are two ways. One is the positive way, one is negative way. So the positive wave fighter and the negative wave fighter. The positive wave fighter is the both energies is coming from the liver. So this is the balanced liver, positive fighter, and this is the imbalanced liver, negative fighter. So this is protector. ये कौन है? ये protector है. This will be creating boundary all around, so no one can attack. ये protector है. This is coming from the liver. Okay, this will protect you. On the other side, the negative fighter. ये आपस में फैमिली में झगड़ा करेगा. He will do the quarreling with the family. He will create fight within. आपस में झगड़ा करेगा. Both are coming from liver. So अगर कोई व्यक्ति बहुत झगड़ा करता है, like many couples are coming and when we are telling them, okay, we also treat the emotions. So they are telling we fight a lot. Can you do some treatment? कि husband wife बहुत झगड़ते हैं. Yes, calm down the liver energies. Sedate the foregut point, Li4 bilateral, liver 3 bilateral, or bleed the ear apex. That is the point of liver energy. Ear apex को bleed कर दो. On the same day, they will the fighting response will reduce on the same day. Because liver energy is very aggressive energy. You should go and play football, cricket, you should run, you should go for gym, you should spend that energy. If you are not spending that energy, then that energy become negative energy. यानी हमारे पास वो एनर्जी स्टोर्ड है. या तो दौड़ लगा दो, एक्सरसाइज कर लो, जिम चले जाओ, रनिंग कर लो, क्रिकेट खेल लो, और नहीं खर्च की तो वो एनर्जी तो रहेगी. एनर्जी तो नष्ट नहीं हो सकती. तो कहां जाएगी? घर में झगड़े में जाएगी. सो दोज हु आर ऑलवेज एग्रेसिव, उनको खूब एक्सरसाइज करने के लिए बोलो. सो पूरी एनर्जी कहां निकलेगी? उनकी खुद की मसल्स पर निकलेगी. सो दैट एंगर एनर्जीज विल कैन बी यूजफुल पॉजिटिवली. वो एनर्जी यूजफुल हो जाएगी पॉजिटिवली. दे विल एबल टू डेवलप द मसल्स, दे विल एबल टू द फिटनेस प्रोग्राम. आप देखना, जो लोग बहुत दवा की एक्सरसाइज करते हैं ना, उन्हें बिठा दो. जैसे कोविड में ऐसे लोग घर पे बैठ गए थे कई बार, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस बहुत बढ़ गए थे ड्यूरिंग कोविड. द वेरी हाई डोमेस्टिक वायलेंस. नॉट ओनली ड्यूरिंग द कोविड, यू कैन सी, अगर इफ यू वांट to remove the aggressiveness from the family, ask the person who is very aggressive, go and do intensive and the vigorous exercise. Automatically we can see, because we have to, हमें अपनी जो फिजिकल एनर्जी है उसे थोड़ा सा निकाल देना है. फिर आएंगे, फिर थके हारे आएंगे, फिर कोई हिलाएगा भी ना. पानी दे दो थोड़ा सा, लड़ने का मन नहीं होगा फिर. थोड़ा सा पानी दे दो, खाना दे दो. हैव यू फेल्ट दिस? कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मन कैसा शांत हो जाता है. हैव यू फील दिस? ऐसा फील किया होगा ना सभी ने. सो नाउ liver is the fighter and liver is the protector also. Now liver is having connection or the good energy. Good energy
means liver and gallbladder are connected with the movement. That's why it's connected with the joints. That's why it connected with the tendon and ligament. Tendon and ligament. Okay, I'm moving my joints. This is my joint. These are the bones. Here the bones, and this is the joint. In between the joints, what we have? We have ligaments, we have tendons. If I want to work on the joint, because the movement will happen in the joint only. यहाँ पर movement नहीं होगी. Movement कहाँ होगी? Joint में होगी. And what is the meaning of wood element? Wood element means movement. If the person is not able to do the proper movement, then it means the wood energy is weak. So, if you want to treat tendons, like someone is having tendinitis, the inflammation of the tendon or ligament tear, लिगामेंट का टूट जाना, फट जाना, टेंडन का प्रॉब्लम में चले जाना, इवन एनी टाइप ऑफ द जॉइंट पेन. Joint are area where we have to connect the bones. For that we have muscles, we have tendon, we have ligament. Even the muscles coming under the wood energy. मसल की बात जब हम करते हैं तो मसल आप देखोगे कि आगे चल के इस अर्थ एलिमेंट में भी आएगी और वुड एलिमेंट में भी आएगी मसल. So when we talk about the muscles, muscle will come in wood element, is liver. Muscle also will be coming in the earth element, spleen. So in the earth element, we are talking about the structure of the muscle, and wood element, we are talking about the function of muscle. Function of muscle, how the muscle is doing function. Both connect with the muscles. तो मसल का काम है, okay, I have good muscle, but functions are not enough. और स्ट्रक्चर का मतलब है यार ये मसल एकदम पतली हो गई, एट्रोफी हो रही है मसल की, एट्रोफाइड मसल है ना, वो स्प्लीन में गई. हार्ट इज मेड बाय मसल. नाउ यू कैन सी there is structural problem of the heart. We have to treat the spleen also. हार्ट मसल का बना है. हार्ट में कोई हड्डी है क्या? हार्ट में कितनी बोन होती हैं? एक भी नहीं. हार्ट में कोई बोन नहीं होती. हार्ट इज मेड बाय मसल ओनली. दैट्स व्हाई इट कैन पंप. So heart is made by muscle. That's why if a spleen is having problem, it will affect the heart also. Okay. So when we talk about the functions, so right now I'm coming back. अगर हम टेंडन और लिगामेंट्स की बात करेंगे, आगे चल के जब भी टेंडिनाइटिस आए, लिगामेंट टियर आए, घुटने की प्रॉब्लम है, इन द रिपोर्ट इट इज सीन लिगामेंट टियर. फिर रिपोर्ट लेके आता है पेशेंट, एसीएल टियर, पीसीएल टियर, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट टियर, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट टियर. Okay, then shoulder pain, in the report written tendinitis है ना. So when we talk about tendons and ligaments, spine comes in which element? स्पाइन के बीच में जो लिगामेंट है, स्पाइन में बहुत सारे लिगामेंट है, यू नो. स्पाइन में लिगामेंट है कि नहीं है? स्पाइन, anterior cruciate, anterior longitudinal ligament, posterior longitudinal ligament. There are too many ligaments around the spine. These all coming under the wood energies. If the wood is disturbed, even your spine will be disturbed, because spine is, क्योंकि हड्डियां तो हैं, लेकिन हड्डियों को पकड़ने का काम कौन करता है? मसल्स, टेंडन, लिगामेंट.
So that's why good energy is very much responsible. We will understand this concept of the spine also. But right now, remember one thing. Wood means tendon ligament. Now, very important things. Let's proceed ahead. The taste of wood is तोर खट्टा. वुड का स्वाद है खट्टा. अगर कोई ज्यादा झगड़ा करता है तो उसको पानी पूरी मत खाने दो, क्योंकि वो देखना जो झगड़ा करता है वो हर वीक में एक बार तो जाता होगा पानी पूरी के ढेल पे, बड़ा खट्टी खट्टी बनाना, खट्टी खट्टी. सोर इज द टेस्ट ऑफ wood element. You know, young female, if the young female craving for sour food, we consider them healthy. है ना? Because in the female, there is as per the structure of the female, as per their hormonal condition of the female, they need more sour food than the male. उनको sour food की जरूरत ज्यादा होती है. In the female body, liver is more important than the male. फीमेल की बॉडी में लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिवर फीमेल की बॉडी में. तो ये कहानी पता है आपको? एक कहानी थी कि पहले एक राजा था. पहले हिंदी में बताता हूँ फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसे. उसे अपने लिए एक राजकुमारी सिलेक्ट करनी थी. ऐसी 50-60 लड़कियां आई थी, सभी एक से बढ़ के एक सुंदर, अलग अलग राज्यों की लड़कियां. तो उन सबको वहां वो लगा था, मेला लगा था, मेला, उसमें भेज दिया. और सब सैनिकों को बोला कि देखो कौन क्या खाता है. कुछ लड़कियां गई मिठाइयों की दुकान पर, सबके लिए सब कुछ भी खा सकते हैं, सब फ्री था. कुछ लड़कियां मिठाइयों की दुकान पर गई, कुछ लड़कियां खट्टे खाने गई. तो जो जो खट्टा खट्टा खाने गई थी उनको सिलेक्ट कर लिया. फिर उनमें से भी फर्दर सिलेक्ट किया. जो मीठा मीठा खाने वाली सबको छोड़ दिया. अब इंग्लिश में है. ये बड़ा कठिन है. कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट. सो वन किंग was planning to select one queen for him. Okay. So out of many females, the few female was craving for sour food in the market, and the king selected that female, and out of them then he did the further selection. Okay. So what I want to tell you, the young female crave for sour food means having balanced hormonal condition. अगर मेल को ज्यादा खट्टा खाने की प्रॉब्लम का क्रेव होता है, उसका इम्बैलेंस है ना. मेल शुड नॉट क्रेव टू मच फॉर sour food. But now remember one thing. As a female, if some female is craving for sweet, it is giving some indication that she is having spleen deficiency. That will understand. So we have to balance that condition. उसको सुनाना नहीं है कि भैया तेरा तो सब गड़बड़ है, तुम तो गई, ऐसा कुछ बोलना नहीं है. It might happen. Like one of my employee female, see, when I ask her what do you want to eat, she always asks, okay, sweet, sweet, sweet. And she is having spleen deficiency, severe spleen deficiency. So we should welcome the desire of the person.
Forcefully you can't tell, no, 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 you should not crave for sweet, you should crave only for sour. Don't do that. Because we crave for the food what our body want. What is the so accordingly we should provide. We can do the treatment. I am asking patient, okay, you are craving for sweets or you are craving for sour food or you are, we know that person is having low BP, will crave for salty food, you know that. अगर किसी का लो बीपी है उसको नमकीन खाने का मन होगा, होगा ना, क्योंकि वो बॉडी की डिमांड है। वो नमक खाएगा तो उसका बीपी बैलेंस हो जाएगा। अगर किसी की बहुत गर्मी बढ़ गई है ना दिमाग में, उसको मीठा खाने का मन होगा, क्योंकि मीठा खाने से गर्मी शांत होती है ना। सो एवरीथिंग वी आर क्रेविंग, लाइक सपोज आई एम स्पीकिंग ए लॉट continuously for 1 hour or 1.5 hour. So I am consuming my energies, and after lecture is over, I might sometime I crave for sweet. It is natural. It is totally natural, right? So the test of good element is sour, khatta. Now eating the more sour food, you are activating good element. एक कहानी है छोटी सी, फिर से हिंदी में पहले। एक व्यक्ति होटल में खाना खाने गया, खाना ऑर्डर किया, खाना आया नहीं 1 घंटे तक। गुस्से में पूरा अचार बचार सब खा के आ गया। वो अचार तो रहते ही है टेबल पे, है ना। So one person went to hotel. Even after ordering the food, he did not get the food for 1 hour. So pickle was there on the table. He was keep eating the pickles and were very angry, shouted, "This hotel is worst and this. You wasted my time. I could go somewhere else. I don't want anything." And he went out. So what happened? Number one, he got angry. Anger is the emotion of Buddha. Write down. Anger is the emotion of Buddha. Number two, he eat pickles. Pickles are sour food. एक तो खट्टा खाया और गुस्सा भी किया. So liver became hyperactive. उसका लिवर हाइपर एक्टिव हो गया, सुपर हाइपर एक्टिव. When he reached at home, because of lots of anger, because of the hyperactive liver, eyes became red. गुस्से में आंखें लाल हो जाती है ना. And BP rises. The blood vessels of the brain ruptured, got paralysis. सिर्फ 1 घंटा लेट खाना आया और रिजल्ट पैरालिसिस. कैन यू इमेजिन द ट्रू पेशेंट? ट्रू. कैसे हुआ भाई? रात को पैरालिटिक अटैक आया. आई गॉट द पैरालिटिक अटैक इन द नाइट. हाउ? दैट डे you ate outside? No, I went outside, but I did not eat anything. Okay, he went outside. But I did not eat anything. Oh, I ordered the food, but he did not bring. I got very angry and I shouted a lot and this and that. And I eat pickles and came. That's why you got that. You did not eat anything. Patient is thinking, I did not eat anything. But he got angry. Liver is movement, liver is expansion. Movement, expansion, liver hyperactive, more movement, more expansion, liver hyperactive, more movement, more expansion, rupture of the blood vessels. और ध्यान रखना कि जब गुस्सा आता है ना, तो कई लोगों को उसी के बाद बीपी शूट अप होता है और पैरालिटिक अटैक आता है.
during that time. Yeah. So in the pickle we also have salt. पिकल में नमक तो होगा ही होगा, और नमक से भी बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज एंगर. शराब पीने से एक बार लिवर बच जाएगा, एंगर से नहीं बचेगा. अगर आप मुझे पूछोगे मैं शराब पीऊं कि 1 घंटा गुस्सा करूं, मैं बोलूंगा भैया शराब पी ले, 2 पैग लगा ले, गुस्सा मत कर. मे बी यू आर ड्रिंकिंग विद फ्रेंड्स, यू आर स्प्रेडिंग जॉय, यू आर स्प्रेडिंग चीयर्स. बट गुजरात में मत पीना, गुजरात इज ड्राई स्टेट. So now, what I want to tell you, the emotion of wood element is anger, aggressiveness, which is very good, but which is very bad also. बहुत अच्छी भी है. When you are playing sports, aggressiveness is required. But very bad जब आप होटल में किसी को गुस्सा कर रहे हैं. When husband is angry on wife, wife is angry on husband, son is angry on father. When you are angry for unwanted reason, maybe you are angry for good reason, but anger will damage you for sure, 100%. Anger will damage your liver for sure. एक पेशेंट आया मेरे पास, ये बहुत पुरानी बात है, 2003 में पेशेंट आया. इन 2003 पेशेंट केम. He was not eating garlic, onion, drink. He was not living in the city. अगर वो पता चला इस गली में शराब है, तो उस गली से 2 किलोमीटर दूर से निकल जाते थे. And he got fatty liver, and after cirrhosis of liver, and he died with the liver failure. He never drink even, but he was angry all the time. आजकल छोटे छोटे बच्चे इतना गुस्सा करते हैं ना, उन सबको लिवर की ट्रीटमेंट की जरूरत है. इफ समवन इज एंग्री अगेन एंड अगेन, प्लीज ट्रीट द लिवर इमीडिएटली. उसका क्या ट्रीट करो? लिवर ट्रीट करो, और उसको बोलो, इफ द पर्सन इज एंग्री अगेन एंड अगेन, टेल मंडूकाशन. Make a fist, keep below the hypochondrium on the right side, and do this. Then you just do gentle movement. Do the mobility of the liver. You can also do for your spleen, but liver is more important. This person will tell you, oh, I'm having too much pain. अरे मुझे बहुत दर्द है. गुस्सा करते हो? नो, आई एम नॉट एंग्री. ठीक है, गुस्सा दबाते हो. Either you are angry or you are suppressing your anger, which is damaging your liver. The severe pain in the right hypochondrium below the ribs, severe, खतरनाक पेन हुआ. What the treatment? Gentle mobility with the and sedate forget. हम बात करेंगे यहां पर एक बहुत शानदार पॉइंट होता है जिसे हम लिवर 14 कहते हैं. दैट इज द अलार्म पॉइंट ऑफ द लिवर. जस्ट डूइंग द जेंटल मसाज ऑन लिवर 14 will balance the liver very nicely. Liver 14, very gentle massage. We'll discuss that. That is the alarm point of the liver. The meaning of alarm point, if there is any problem in the liver 14 will be painful just by touch. Gentle massage करो इसको. Okay.
So we can see the test of liver is sore. Suppose you want to do something, but you are not able to take the first step. दही खा लो, दही दही खाओ, 2 चम्मच दही खा लो. Take the curd. Curd is sore. It will increase your budo, and you will get okay. You will let me do this. Sore food. Sore food is good when you do take it as a therapy, as a treatment. The anger means anger. If you are not able to express your anger, then it is irritability. So the emotion of liver is anger, which is good as well as bad. Now, if you are not able to express your anger, then irritability and frustration. एक ही प्रश्न किसी व्यक्ति से 5 बार पूछ लो, पता चल जाएगा लिवर कैसा है उसका, है ना. या डॉक्टर को पता करना, जैसे आप एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, डॉक्टर साहब आई एम हैविंग नी पेन. आफ्टर अगेन डॉक्टर साहब नी पेन. ओके ओके आई अंडरस्टूड. डॉक्टर आई नी पेन 5 बार बोल दो, समझो डॉक्टर को ही लिवर की ट्रीटमेंट की जरूरत है. Irritability means, and many person, we know what is irritability. Many few people get irritated very fast. They need liver treatment. Their liver need treatment. They're very good person, whether the male and female. जब भी कोई व्यक्ति irritate होता है ना, take it very positively and do the proper treatment. That person, the energy of the irritability will convert in the love. Once you balance the liver ना, that energy will convert. ध्यान रखिए, जो जितना गुस्सा करता है ना, वो व्यक्ति उतना ही प्यार भी कर सकता है, और जो गुस्सा नहीं करेगा उसका प्यार भी कम ही होगा, है ना. इफ यू वांट टू गेट द वार्म लव, then just find the person who is very angry. As you balance the liver, the entire energy will convert in the love. फिर इतना प्यार उमड़ेगा कि आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, इतना प्यार. ऐसा मेरे साथ हुआ, मैंने बता एक कहानी, चलिए छोटी सी कहानी. गुजरात में है काठियावाड़. ये लोग बड़े प्यारे होते हैं, है ना. There is one place in the Gujarat they call Kathiawadi. If they are hating you, they will 100% hatred. If they love you, 100% love. Not 100%, 200, 300% love. So one of my patient came in my clinic with the liver cirrhosis and even liver cancer. Initially he was having liver cirrhosis and was converting the liver cancer. And he was hopeless from all the place. Suddenly by my treatment he started getting some benefit. ट्रीटमेंट किया और उसे कुछ आराम मिलना चालू हो गया. Maybe only he started getting 10% benefit and he got 200% faith on me just by the 10% relief. My clinic is just entire day full with him only. 15 patients per day sent by him only, and he was sitting all the time there only. Now he was, when I'm eating the food, I have finished my food. Doctor Saab, please eat this also.
He was taking chapati, putting dal, and messing with the hands. Please eat this. Sometimes this love is very difficult to digest. We are full of stomach, but we have to eat. और वी आर वेरी हाइजीन सीकर, और कोई ऐसे हाथ से मीड मीड के दे रहा है, लो खाओ, और सामने बैठा है, अभी खाएंगे अभी। ऐसा भी नहीं कि कोने में जाके थोड़ा इधर उधर कर दो, है ना। यू ऑल्सो फेस दिस? ओ गुड गुड गुड, वंडरफुल। So that was having liver problem. I treated the liver, all the frustration, all the irritability converted in the love. Love is means next element after the liver, heart will come. Because energy is continuously moving, jumping. This patient was having too much faith on me. He was having liver cancer, but by looking my face, his pain was disappear all the time. But suddenly I went in South India for 1 month. He got depressed and expired within that 1 month only. He thought, now who will save me if I get some problem? Who will save me? Who will save me? So liver is frustration. Many students are sending me message, doctor, I'm very frustrated. I'm very, very frustrated because of this, because of that. We have to treat the liver. हमें क्या treat करना है? Liver treat करना है. If the person is hitting the source test, because maybe might be liver energy is balanced, he is not required that energies. He might be craving for other food, he might require other energies. Okay, because sour food is belong to liver, but there are other element also. Some element connect to the bitter taste, some element connect the sweet, some connect the pungent, तीखा, सबके अलग अलग एनर्जी है. So if you are craving for certain food means your body need that thing. आपके शरीर को ऊर्जा की जरूरत है. Liver is reflecting in the eyes. Everyone know? आंखों में reflect होता है. Now, if the person is using too much mobile phone, continuously consuming the energy of liver, don't think that you are just using the energy of eyes. The liver is getting dry movement by movement if you are using excessive eye energy, especially in the dark room. अगर मैंने सारी लाइट बंद कर दी और आई एम लुकिंग द मोबाइल, so my eye become more dark. Sorry, my eye become more dry, means liver is getting dry, and in the future will be suffering dryness due to liver dryness. तो ये कुछ लिवर के बारे में बातें थी. जब लिवर का एक स्वाद भी होता है, एक लिवर की जो स्मेल होती है, द स्मेल ऑफ लिवर इज रेंसिड. यू नो व्हाट इज रेंसिड? रेंसिड जानते हो? बासा, बासी रोटी खाई है कभी? बासी, अरे रात की 2 दिन की रखी रोटी में से कैसी स्मेल आती है? बासी, है ना. लिवर की वो स्मेल होती है. द स्मेल ऑफ लिवर इज रेंसिड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Maybe if rancid smell coming from some area, some body part,
मे बी रेंसिड स्मेल, बासी स्मेल कमिंग फ्रॉम स्वेट, पसीने में से, मुंह में से, उसके स्टूल में से, कहीं से भी अगर वो बासी बदबू आ रही है, it indicating about the liver. So today we have discussed a little bit about the liver. We will continue the discussion tomorrow. कल हम इसका और भी आगे समझेंगे। ये बहुत ही बेसिक बातें थी, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी था, ताकि हम जब हम ट्रीटमेंट प्लान करें तो हम ठीक से कर सकें। ठीक है? Any question related to topic? If any question related to topic, please do not ask me protocol. I will not discuss any protocol. I will go step by step. Yes. मुकेश जी, या हाँ सर, जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत अच्छी क्लास लगी सर लीवर पर सर। थैंक यू। मैं वेट कर रहा था सर। सर हम लीवर को सर कैसे, हम एक लाइन में अगर समझे सर तो हम कैसे सही कर सकते हैं सर? हाँ, यही तो बात मैं बताऊंगा। देखो देखो, आप ये जो आप पूछ रहे हो ना, ये सब आने वाला, देखो ये सब आगे देखो, ट्रीटमेंट देख रहे हो, ये सब ट्रीटमेंट लिखे ना, ये पॉइंट वो पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स भरे पड़े हैं, ये सब आगे समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा। कंसेप्ट समझाना पड़ेगा ना, सब आ जाएगा। और सर सेकंड सर, लीवर का सर जो इमोशन रहता है सर, एंगर क्यों रहता है सर? लिवर का इमोशन, क्योंकि वह- सी आई विल टेल यू, एंगर जो है ना, इमोशन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इमोशन। वन इमोशन हैविंग हाई एनर्जीज, एंड सम इमोशंस आर हैविंग very low energies. For example, look at here. As per TCM, all the emotions are energy. So, in the five element cycle, some emotion belong to high energy, some emotion belong to low energy. For example, if we see the five elements, on the one side we have yang emotion, yang energy. Yang energy means the emotion of the high energy. On the other side we have yin energy. So the meaning of yin energy is the emotion of low energy. So look at here. Anger means sudden burst out, suddenly something coming out. It is like a rising of great emotional energy. Because in the anger we need lots of energy. Anger कैसे आता है? एकदम से ऐसे एंगर आता है। एंगर मीन्स सडन very high energy pattern. That is anger. And in the same way, if you go to the fire energy, so what is anger? If you go to the fire, fire is joy and happiness. Because joy and happiness also having good energy. Suppose you are joyful. आप एकदम joyful हैं, आप बड़े खुश हैं, आप कभी दोस्तों के पास गए and you are very happy, you are very joyful, then you will talk very nicely, you will laugh very nicely, you will enjoy the party, you will dance with your friends, you will enjoy all the moments. So this is the energy of, so this is the higher energies. On the other side, we talk about the yin energy. Yin energy is coming from, the low energies are coming under the yin. For example, if we talk about the earth energy, or the metal energy, or the water energy, so we can see, we will be discussing worry, sadness, and so worry, sadness, and fear. These all are the energy of low energy pattern. For example, fear. इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किए गए। फियर कौन सी एनर्जी है? जैसे मान लो एक शेर है और एक बकरी है। शेर गुस्से में है,
और बकरी डरी हुई है फियर में. बोथ आर हैविंग इमोशंस. द टाइगर इज हैविंग anger emotion, very high energy emotions. He want to attack, he want to fight, and that god is having very poor fear, है ना. तो इसी कारण से जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो मिटा देना चाहता है, और जो डरा हुआ होता है वो मिट जाना चाहता है. डरा हुआ व्यक्ति कूद जाएगा, सुसाइड कर लेगा, है ना. तो ये सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन राइट नाउ बिकॉज यू आस्क, आई एम टेलिंग यू द हायर एनर्जीज मीन्स एंगर एंड जॉय, द लो एनर्जी मीन्स वरी, सैडनेस एंड फियर. नाउ अब मुझे एंगर को कम करना है, तो मुझे एनर्जी को थोड़ा सा शांत कर देना है. इफ आई वांट टू वर्क ऑन द एंगर, I will reduce the energy. On the same way, if I want to work on the fear, I will increase the energy. क्योंकि fear means low energy. अगर किसी को अंदर fear है, मैं उसकी एनर्जी बढ़ा दूं तो fear टिकेगा ही नहीं. इसे हम ऑरा में भी ऐसा बोलते हैं, the human body is having one aura. Okay. So our body, when aura is going out of body, we are having positive emotions. Okay, like joy, happiness, even anger. And when our aura is contracting and going inside the body, that is worry, sadness, fear, even suicidal tendency. So the people who do suicide, they are having very weak aura, weak energy. Okay. So just we can change the energy with the points and we can change the emotions. जो लोग सुसाइड करते हैं उनका जो एनर्जी ऑरा है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट होके अंदर चला जाता है ना. Got it? Yeah. Any question? Yes, Deepika ji. गुड इवनिंग सर. Very good सर evening. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. सर अभी शाम को ही ना मैं अपने बेटे से गुस्सा हुई थोड़ा सा. वो भी 11th में, वो भी मेरे से हुआ. मैं उसको कह रही, मैंने कहा कौन सा तेरे को धागा पहनाऊं, क्या करूं, मुझे ये नहीं समझ में आता. और आज ही आपने गुस्से के ऊपर सारा कुछ वो कर दिया सर. चलिए धागे की बात बताते हैं, धागे की बात है ना. हाँ. अगर हम लिवर की एरिया में हम अपोजिट कलर का धागा पहनाते हैं, लिवर का अपोजिट होता है ब्राउन कलर. क्या होता है? ब्राउन कलर. अभी आपको ये तो पता नहीं है कि लिवर कहाँ होता है ना. तो अभी जब हम सीखेंगे तो हम ब्राउन कलर का धागा, हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये जो ऊन के धागों से भी काम किया. तो अगर आप ब्राउन कलर लगा देते हैं, यू आर पुटिंग द ब्राउन कलर, सपोज यू आर पुटिंग द ब्राउन कलर ऑन द लिवर 3, यू विल काम डाउन द एंगर. तो आपने गुस्सा किया ना, तो आपने गुस्सा किया तो आप अपना लिवर 3 और Li4 को सेडिट करो, 4 गेट को सेडिट करो, नहीं तो वो आपको ही डैमेज करेगा. इसका ट्रीटमेंट समझेंगे हम, ए वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर एंगर. इस्माइली जी, अनिल सिंह जी. यस. Good evening, sir. Yeah, Sir, this is regarding liver in and liver chi, both are different, you said, sir. In that, you yes. said liver chi is never deficient, means liver in will become deficiency, sir. That we'll discuss later. It will come. Okay, okay. Yeah. So one more thing I want to ask, sir. Now, my mother is very old. She's around 75 years plus now. But she's very loving, but she gets angry for every small reason. She gets angry. She says, So just mother-in-law. work on liver, treat the liver. Okay. Now, because he's old, so Huh. she might be having liver yin deficiency. She might be having some liver pattern. So Okay. what the pattern she is having, you will Okay. understand in few days Okay. with all the symptoms, right? Okay. Sir, suppose a person is always angry from the childhood, is angry. In the sense, usually men, no? They're always like that. They are always angry mood. So you mean to say? It means a need to balance liver. Okay. It is their nature is not angry, yeah? How it is, sir?
Actually, anger is not the nature. Actually, if angry, suppose we are doing work, like we are playing the cricket with good anger, that is good. But angry all the time with the friends, with the family, that is bad anger. So then we need to work on liver. Okay. Thank Whether you. the personality look like, if we balance the liver, then these person having many other characteristics like they speak Ego. very loudly, Yes, egoistic. very definitely egoistic also. So if we balance the liver now, so their performance will increase and they will feel better. We But will work. such person we cannot go and do anything for liver point, liver 3, whatever you said now. No, Liver right now I 3. did not tell the points. You showed no, sir. Just, Liver 3 foot. I give an example, Okay, okay. but we are having many protocols for the liver, which Okay. will be discussed, right? Okay, sir. Thank you very much, Till sir. the time, definitely you can use forget sedation also. Okay. Till the time we have not discussed, you can use forget sedation. Yeah. Okay, sir. Thank you very much, sir. Welcome. Yes, Anil Singh ji. Sir, my question is, जो वुड की और फायर की एनर्जी है वो हमेशा बॉडी में अप साइड में जाती है क्या, ऊपर की तरफ, डाउन में Yeah, नहीं yeah. जाती क्या? Yes, yes. No. The body energy is going upward and body energy is going all around. देख, अग्नि तो ऊपर ही जाती है, अग्नि को जलाओ, अग्नि का नेचर का है ऊपर जाना, जल का नेचर का है नीचे जाना है. ओके, द फायर एनर्जी वांट टू गो अपवर्ड. But if you talk about the body energy rising upward and expanding all around. Body energy सभी दिशा में जाती है. Clear, Mr. LG? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay. Meghna ji, yes, please. नमस्ते सर। नमस्ते जी. सर आज मैं पहली दूसरी बार सुन रही हूँ आपको, कल भी सुना था। ऐसे लगता है सर एक ज्ञान सरिता के बीच में सब बैठे और सुनते ही रहे बस। और इतना अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग है सर, कंसेप्ट इतने क्लियर होते हैं सर। जब हम सोअर थिंग्स खाते हैं और अगर हमें हेडेक होता है, मसल पेन होता है, तो इट मीन्स लीवर एक्सेस है, लीवर लिवर एनर्जी। इम्बैलेंस है. इट मीन्स लिवर इज इम्बैलेंस्ड. अगर आपने खट्टा खाना खाया और अगर खट्टा खाना, वी हैव डिस्कस द वुड मीन्स कनेक्ट द जॉइंट्स. यस सर। वुड का संबंध जॉइंट से है. इफ यू आर ईटिंग द सोर फूड and it will affecting your wood element and getting the joint pain, means that time you need to work on liver first. Balance the liver if you want to eat the sour food, because your liver is not good. That's why joints are getting inflammation very fast. Okay, तो लिवर को ट्रीट करो. जब लिवर ठीक होगा फिर बाद में खट्टा खाना खा सकेंगे. ट्रीट बाय फॉरगेट सर। न सिर्फ फॉरगेट नहीं, फॉरगेट भी वर्क। और भी आएंगे. लिवर मीन्स आगे हम समझेंगे. लिवर एक बर्तन की तरह, आई विल टेल यू. जैसे आपने क्या किया कि आज रात को लौकी की सब्जी बनाई एक भगोने में, 1 मिनट, और खाली सब्जी और भगोना धोया नहीं. सुबह उसी भगोने में दूध गर्म किया बिना धोए, तो क्या होगा? हट जाएगा, है ना. लेकिन हमने बोला अब आपको यही दूध पीना पड़ेगा और घर के सारे लोगों को भी. तो लिवर इज लाइक ए बर्तन, यूटेंसिल. व्हेन वी आर स्लीपिंग इन द नाइट, all the blood one by one coming to the liver and getting detoxified. In the night, detoxification is going on. That's why we should have a very good and sound sleep in the night. तो रात को गहरी नींद होना जरूरी है, तभी हमारा रक्त एकदम साफ रहता है. So liver is purifying the blood. But if liver is not good, जैसे वो लौकी की सब्जी बनाई, अब लिवर में खुद गंदगी है, blood is coming
और गंदा हो के जा रहा है ना। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हमें पहले समझना होगा, then person will suffer with the psoriasis, eczema, itching, genital itching, fungal infections, lots of problem, blood disorders, ये सारी प्रॉब्लम उसे होंगी। So there are many other understanding of the liver we will able to understand within few days, तब हम समझ जाएंगे, तब हम कर सके, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। यस हेमंत कुमार जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर जैसे लीवर अगर बहुत ज्यादा आदमी खुश है तब भी हाइपर एक्टिव रहता है कि केवल क्रोध में ही हाइपर एक्टिव रहता है? Liver is good and active. Liver is hyperactive in the anger, irritability, frustration. When the person is joyful, then your fire is high. Joy is connected to the fire. All the emotions having different. But I will tell you one thing कि ये हार्ट है, ये हार्ट है. Whether we are angry or we are sad or we are depressed or we are in the fear, we are in the any emotion, finally it will affect the heart. Heart को तो affect करेगा ही करेगा. When we talk about the liver, liver is connected with the anger, frustration and emotion and irritability. तो अगर आप जॉय की बात कर रहे हैं तो जॉय का आगे का है, थोड़ा और आगे का इमोशन है. लिवर का इमोशन है एग्रेसिवनेस, एंगर, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, एक्सेसिव एनर्जीज पैटर्न, वो लिवर के इमोशंस है ना. लेकिन सर जैसे किसी को इचिंग रहती है, कभी कभी सालों 6-6 महीने रहती है, साल साल भर रहती है, तो इसका मतलब है कि लीवर सही नहीं है, इसका मतलब? इसका आंसर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था, वो बर्तन वाला, हाँ ध्यान है हाँ कि हाँ बर्तन हाँ। गंदा. अब वही रात को लौकी की सब्जी बनाई, सुबह उसी में आप दूध उबाल रहे हो, तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, your liver is not good, your liver is stagnant, your liver is having some disharmony. So in the when the liver is doing detoxification, blood will not be detoxify properly. लिवर का काम है ब्लड को शुद्ध करना. जब लिवर ही खुद खराब है तो ब्लड को शुद्ध नहीं करेगा, खराब खून बनेगा और खुजली आएगी, फंगल इन्फेक्शन होंगे, इचिंग आएगी, जेनाइटल पार्ट के पास ऐसे रेसेस बन जाएंगे, है ना. उस सब में लिवर को ट्रीट करना पड़ता है. इचिंग अच्छा अराउंड द स्क्रोटम, इचिंग अराउंड द जेनाइटल्स, सोरियोसिस, एक्जिमा, सब में लिवर का ट्रीटमेंट होता है पहले, ओके सर, है ना. ओके, थैंक यू। यस यस मधु जी, लिंशन जी, या सर सर यू सर मैं पूछूं कुछ पहले? हाँ हाँ. सर मैं ये एक्सक्यूज मी कह रही थी, मेरे बेटे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको फाइब्रोसिस है, लिवर फाइब्रोसिस, और वो तो पॉइंट के नाम से इतना चिढ़ गया है 3-4 महीनों से, अभी भी ज्यादा 6 महीने से. पहले लगाता था फोरगेट थोड़े टाइम तक, पर अब तो इतना चिढ़ गया है, पॉइंट का नाम सुनते ही लड़ना शुरू कर देता है. तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई जैसे कुछ तो ड्रॉ क्या करो, करके हाथ को. उसको उसको थोड़ा सा, जैसे ये दिस इज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द लिवर ड्यू 20, रात को सोता है ना तो प्यार से ऐसे हाथ फेरो और थोड़ा सर कैस्टर वो ऑयल और कोकोनट ऑयल मिला के थोड़ा यहाँ लगा दो ऐसे. सर वो टच ही नहीं करने देता. 55 इयर्स का बेटा है मेरा, वो अब टच हम ही नहीं करने देता. जब वो टच नहीं करने देगा तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप बताइए. वही मैंने कहा कोई ऐसा कोई हो कि जैसे हाथ ड्रॉ आर कर. यू आस्किंग सम टोना टोटका. नहीं, हाथ ड्रॉ करके उस पे लिवर 4 लगा दे, LI लिवर 3 हाँ तो लगा दे. इफ यू पुट द पॉइंट देन डेफिनेटली इट विल वर्क. नहीं, उसका ड्रॉ ड्रॉ कर ले हैंड को. तो उस पर उसके जो पैर में हाँ और हाथ में हाँ, सेडिट कर दो, Li4 Liver 3 को सेडिट कर दो आप. हाथ का तो बन जाएगा, पैर का बनाना मुश्किल है ना, हाथ का तो बन क्यों, जाएगा. लिवर थ्री पे ऐसे लगा दो, सोते में पता ही नहीं चलेगा उसको. नहीं, वो तो बहुत तेज है, तेज है क्या? बहुत ज्यादा तो तेज है. समझाओ. तो नहीं फिर समझ क्या? रहा है. अभी आया था तो मैंने बोला मैं सर से बात कर रही हूँ, कहते कोई तो भाई जरूरत नहीं है बात करने की. किसी के पास कोई उपाय तो बताओ भाई इस चीज.
मेरे पास है। यस हाँ सर। बोलिए बोलिए ज्योति जी। हेलो सर। सर क्वांटम फिजिक्स होती है ना सर, जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स होती है, हाँ एक्शन रिएक्शन, ऐसे क्वांटम फिजिक्स होती है जिसमें हाँ हम क्वांटम फील्ड के थ्रू जाते हैं, तो उस बेस पे और फ्रीक्वेंसी से पूरा सर मेरिडियन स्कैन हो जाता है। और डिस्टेंटली जैसे अगर आपका करना हो तो आपका मेरिडियन स्कैन पूरा यहीं बैठे बैठे आई कैन डू एंड सेंड यू पीडीएफ, एंड यहीं से फ्रीक्वेंसी देके वो पूरी मेरिडियन हार्मोनाइज हो जाती है। वेरी नाइस। मधु तो जी ये ज्योतिका किया जी जा मिल गई सकता आपको? है। ज्योतिका हाँ जी जी, मिल गई, इनसे कनेक्ट करना। हाँ मैं पूछ ये लूंगी बहुत इनसे। बिजी रहती है मोस्टली सर वैसे। जब कोर्स हो जाएगा ना तब मैं आपको बोलूंगी सर ऐसा है, आपका एक स्कैन भेजूं क्या? बट हाँ आज हाँ बोलना पड़ा, अभी भेज दो, बाद में क्यों भेजोगी? मैं फोटो तो बहुत चाहिए कि एक। थैंक यू सर, मैं बात कर लूंगी इनसे। यस Hello sir. रोशन जी। या Sir, I would like to ask a question. यस। Yes, sir, you said liver chi is never deficient. हम्म What is the explanation for that, sir? Why it is not deficient? Is it related to ethereal soul energy coming through the internal meridians? Is it so? एक्चुअली Why liver chi? या बिकॉज सी दैट इज etheric energies, that is etheric energies, and that is available in abundance. Hmm. It is always available, it is always there, just it want to get flow, just it want to be in the flow all the time. There is no one is there who can suppress the liver chi. It's very difficult to suppress the liver chi. We can just control the liver chi. So we are telling liver chi never deficient. Suppose liver chi is creating the problem when it is not. Liver chi is continuously flowing from birth to death, continuously flowing, and it should flow. If liver chi is flowing continuously, then only we are healthy. इसकी आवाज आ रही है when the liver chi is flowing continuously, कि liver chi जैसे उदाहरण के लिए कि हवा है हमारे तरफ, air is never deficient. We need oxygen all the time for life, for survive. So we always have air all around, always have oxygen all around. So air is never deficient. In the same way, liver chi is never deficient. But it can be having some disharmony. It can be having some disharmony. Like in the future, we will discuss this is the liver. Liver yin might be deficient. Liver yang might be having some problem. Liver bind might be having some problem. But liver chi is available in the abundance. It's continuously entering from DU20. So our DU20 point is always open. It's continuously entering from the cosmos and continuously flowing throughout the body. And it is like liver energy, like a soul energies. So that's why it can never be deficient. Okay. Understood little bit? Yeah. Yes, done. Ajit ji, I think Anil ji, your question is done. You have another question? Hemant Kumar, your question is done. और किसी को कोई प्रश्न है? If anyone is having any question, anyone can unmute yourself and ask. Yeah. गुड इवनिंग सर। Very good evening, Ratna Pargi ji. बहुत दिनों बाद अच्छा लग रहा है। सर कोई बच्चा है वो हमेशा बोलता है मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो क्या उसकी लीवर इम्यूनिटी क्योंकि बच्चों को खूब भूतों की कहानी सुनाई है कि बच्चा सो जा, दूध पी ले नहीं तो भूत आ जाएगा, बच्चा ये कर ले, पढ़ ले नहीं तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, है ना? तो बच्चे को बचपन में इतना डराया गया है कि अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिक्स हो गया, बिकॉज इन अवर ब्रेन वी हैव वन पार्ट दैट इज कॉल्ड एमिगडाला. Amygdala is developing till the 7 years of age, and it is storing fear of the childhood. So in the childhood, we should tell or the brave story, okay. But instead of that, we are not telling that. We are doing opposite. So what to do now? Do the treatment of kidney, because fear is having connection with the fear factor. Fear is kidney. Okay. So this is coming in the kidney element. We will be discussing later on. But right now you're asking, so I'm telling
अगर बच्चे को ज्यादा डर लगता है तो किडनी ची को बढ़ाओ, किडनी ची को इम्प्रूव करो, है ना? ओके, एनीवन एल्स? One more question. Sun rises from east, na sir, and it is connected with the fire energy actually. Why Which we one? take food? Sun rise always from east, and we When take sun food is as a rising, okay, sun is rising, that is good energy. When sun is reaching on the peak, it is fire energy. When sun set, that is metal energy. Right? okay. Okay. हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर, जैसे मतलब कि लीवर की एनर्जी विंड होती है सर, और हाँ, फायर की एनर्जी हैप्पीनेस होती है, मतलब कि सीधे विंड विंड सभी हीट ऑफ, एलिमेंट्स। हाँ। हाँ जी। तो हम्म अब मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये मतलब कि विंड है जो, हम्म या कोई भी एनर्जी है, ये ऑर्गेन्स क्रिएट करता है, या विंड का या इसका एनर्जी का नुकसान होता है? ये नहीं समझ में आ रहा है सर। उदाहरण के लिए, आप आग के पास जाओगे तो गर्मी लगेगी। ऐसे आग जल रही है, ऐसे ऐसे हाँ करोगे जी। तो गर्मी लगेगी ना, लगेगी कि हाँ नहीं? जी। तो फायर की एनर्जी क्या होगी? हीट हो गई, है ना? ऐसे आप पानी के पास जाओगे तो ठंडा ठंडा लगेगा, तो वो वाटर की एनर्जी कोल्डनेस होगी, है ना? हाँ जी। ऐसे आप जब वुड के पास जाओगे हाँ तो जी। हलचल महसूस होगी, हलचल। जैसे आप पत्तियों को देखे, पत्तियों को देख रहे हैं, पत्तियां हिल रही हैं, हिल रही हैं, वो विंड एनर्जी है। एनर्जी का मतलब होता है कि फील क्या हो रहा है आपको। अरे आपको हलचल दिख रही है, हलचल। द एनर्जी ऑफ बॉडी इज विंड, विंड मीन्स हलचल। जैसे बच्चे हैं, हमेशा जंप करते हैं, हमेशा वो गतिमान रहते हैं। जैसे पानी है, हमेशा बह रहा है। जैसे मछलियां हैं, हमेशा घूम रही हैं। तो जो कंटिन्यूसली मूवमेंट है ना, वो है विंड एनर्जी। जैसे हवा देखोगे, हवा कंटिन्यूसली फ्लो करती ओके। है। तो वुड, इसलिए वुड की एनर्जी है विंड। वुड यानी लकड़ी, है ना? वुड मीन्स पेड़ पौधे, उसकी एनर्जी। अब ये जो बनाया ना पूरा 5 एलिमेंट्स, ये बहुत ही सरल भाषा में बनाएगा ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। हमारे बॉडी में ओके जब सर। भी कोई हलचल पैदा करना है हमें, तो वो लिवर के पास वो एनर्जी है। if we stimulate the liver, it will start movement। वो ऊर्जा लिवर के पास है। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में लिवर राइट साइड में होता है ना लिवर। मे बी टुमारो विल डिस्कस लिवर इन द राइट साइड, बट energetically liver is in the left side, physically it's in the right side, ओके energetically liver in सर। the left side। आप बोलोगे कि मुझे लेफ्ट हेडिक है, लिवर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, लिवर। जब नाड़ी देखते हैं तो लेफ्ट हैंड में लिवर की पल्स मिलती है, राइट में नहीं मिलती। ओके सर। फिजिकली, so what I want to tell you, energetically things are, so your question is this about the energy, how to understand the energy। ऐसे समझो कि आग के पास गए तो गर्मी महसूस हुई, तो गर्मी उसकी एनर्जी है। पानी के पास जाओगे तो ठंडक महसूस होगी, तो ठंडक उसकी एनर्जी है। और वुड के पास जाओगे तो जो हलचल दिखेगी, वो विंड उसकी एनर्जी है। आपका प्रश्न ये था और उसका ये आंसर, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। वेलकम। तो ओके, सर हमेशा लिवर 13 को ये करना चाहिए। 13 लिवर 13 को क्या करना चाहिए? टोन करना किस टोन लिए? करना, किस लिए? ताकि बनी रहे हमेशा एनर्जी। लिवर 13 को टैप कर दीजिए, टोन की जरूरत नहीं है। लिवर 13 को टैप करिए। लेकिन बाकी सबको भी लिवर 13 पता नहीं है, तो हम इसके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे। कभी बहुत सारे लोग नए हैं, दे डोंट नो लिवर 13, लिवर 14, बट यू नो, तो यू जस्ट टैप द लिवर 13। ओके, सो डन फॉर टुडे। आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं।
और सैमसंग जी आपका प्रश्न बाकी है। सैमसंग जी सडेशन कैसे कर सकते हैं? सडिशन कल जी बताओ, ठीक है, तुम्हारा बिल्टा है। ओके, ओके, थैंक यू सर। कोई आस्किंग? यू। किसने पूछा प्रश्न? ठीक है, जिसने भी पूछा कल बता देंगे। चलो ठीक है, डन। सी यू टुमारो, गुड नाइट। इसकी गुड रिकॉर्डिंग हम नाइट जल्दी सर, ग्रुप में थैंक डालेंगे। यू सर। राइट सर। सर